Today I will solve some more problems. Find the derivative by using first principle. Find the derivative of log ax plus b from first principle. Let y equals to log ax plus b if delta x and delta y are a small change in x and y respectively, then y plus delta y is equal to log a into x plus delta x plus b. Only I have replaced x by x plus delta x and y by y plus delta y. Log ax plus a delta x plus b. It is the first step. In second step, subtracting equation 1 from 2, delta y equals to log ax plus b plus a delta x minus log ax plus b equals to log ax plus b plus a delta x upon ax plus b. Since log m upon n equals to log m minus log n equals to log ax plus b by x plus b 1, separating these two terms, dividing in third step, dividing both sides by delta x. We get delta y by delta x
equals to log 1 plus a delta x upon ax plus b divided by delta x. Now convert this expression in the form log 1 plus x by x. क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को जो मालूम है वह है तो हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x equal to 1. So convert this expression in the form log 1 plus x by x. x के बदले हम लोग को यहां पर कितना है a डेल्टा x by x plus b. इसलिए यहां पर a डेल्टा x by a x plus b लिख दिए. लेकिन हम लोग के पास था कितना यहां पर डेल्टा x, इसलिए यहां पर a by a x plus b से मल्टीप्लाई कर दिए. Taking limit when delta x tends to 0. Delta y by delta x, limit x tends to 0, delta x tends to 0, log 1 plus a delta x by a x plus b upon a delta x into a by ax plus b. This limit will be dy by dx. And this will be 1 into a by ax plus b. Since limit x tends to 0, log 1 plus x upon x equals to 1. Also, delta x tends to 0 implies a delta x by ax plus b tends to 0. Or dy by dx equals to a by ax plus b. Find the derivative of e power ax plus b using first principle. Let y equals to e power ax plus b.
if delta x and delta y are a small change in x and y respectively, y plus delta y equals to e power a into x plus delta x plus b equals to e power ax plus a delta x plus b, or y plus delta y equals to e power ax plus b plus a delta x equals to e power ax plus b e power a delta x by the laws of indices. लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या हो जाएगा कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है, तो यहां पे सेपरेट कर दिया है. Subtracting equation 1 from 2. Delta y equals to e power ax plus b into e power a delta x minus e power ax plus b. Now taking common, e power minus 1. E power ax plus b कॉमन लेने से क्या बचा, e power a delta x minus 1. Dividing both side delta x. Dividing both side by delta x. We have delta y by delta x e power x plus b e power a delta x minus 1 upon delta x. Now expressing this expression in the form e power x minus 1 by x into a. Taking limit when delta x tends to 0. Limit delta y by delta x, delta x tends to 0
e power ax plus b e power a delta x minus 1 upon a delta x into a. Of this limit will be dy by dx. E power ax plus b into 1 into a, since limit x tends to 0, e power x minus 1 upon x equals to 1. Also, delta x tends to 0 implies a delta x tends to 0. a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही रह जाएगा कि 0 into anything equal to 0 equal to a into e power x plus b. Now some formulas of derivative. Derivative. Number 1, power rule. d by dx of x power n equals to n x power n minus 1. See here, base is here x with respect to x. If these two are same, यदि दोनों सेम होगा तो पावर रूल लगेगा. Number 2, general power rule. d by dx u power n u power n minus 1 du by dx. U is a function of x. अब यहां देखो, बेस यहां कितना है u with respect to x. ये दोनों क्या डिफरेंट है? If base and with respect to are different, then we apply general power rule. Number 3, sum rule. d by dx of u plus minus v plus minus w plus minus dot dot equals to du by dx plus minus dv by dx
plus minus dw by dx plus minus dot dot dot. If plus sign is given, then we take right in the plus sign. If minus is given, then we take minus sign. यदि प्लस साइन है लेफ्ट साइड में तो राइट में प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा. U, V, W are functions of x. Are functions of x. It means derivative of sum of the functions is equal to sum of their derivative separately. Derivative of the sum of the functions equal to sum of the derivative separately. Derivative of any constant will be 0. dy dx of c equals to 0. C is a constant. किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. नंबर 5, dy dx of cu. Here c is a constant, u is a function of x. तो कांस्टेंट dy dx के बाहर चला आएगा. C is a constant and u is a function of x. U is a function of x. Number 6, product rule. dy dx of ub. Here both ub are functions of x. Taking one function as constant and differentiate the other. एक को कांस्टेंट माने दूसरे को डिफरेंशिएट किए, फिर रिवर्स हो जाएगा. जिसको डिफरेंशिएट किए उसको आप कांस्टेंट मानेंगे और जिसको कांस्टेंट माने उसको डिफरेंशिएट करेंगे. u v are functions of x. Functions of x. Quotient rule. dy dx of u by v. U in the numerator and v in the denominator. So we can learn this formula as denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator upon denominator square, provided v is not equal to 0. d by dx of e power x equals to e power x. Here
यहां पर e का पावर क्या है, x है, विथ रेस्पेक्ट टू x है। देखो यहाँ पर e का पावर x है, विथ रेस्पेक्ट टू x सेम रह जाएगा। नंबर 9, d by dx of a power x, a power x log a। 10, d by dx of log x। यहां भी log के साथ ये x है, विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो 1 by x हो जाएगा। d by dx of e power ax equals to a e power ax। d by dx log ax plus b equals to 1 by a upon ax plus b। इसमें बीबीए, बीआईएम और ग्रेड 12 मैनेजमेंट के लिए अल्जेब्रिकल ही फॉर्मूला लोग पढ़ना है। साइंस ग्रेड मैथमेटिकल भी होता है। बीबीए, बीआईएम फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर और ग्रेड 12 मैनेजमेंट, और साथ साथ ये ग्रेड 11 साइंस का भी है, लेकिन ग्रेड 11 साइंस में से ज्यादा भी पढ़ना है। बस आज के लिए कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट वीडियो से मेरा इसमें बायोलॉजिक फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालेंगे। आज के लिए इतना ही है इस वीडियो के लिए।